Hello everybody. Guys, please test connection. Is my audio clear and screen visible? Okay. There should be no cracking, breaking of voice. The screen should be visible, legible, and moving. It should not be static. If I change the screen, it should be changing. Very fine. So, hey all, good afternoon. Well, I see not everybody has joined in yet. Okay. However, I see six of you have already are already here. Maybe we can start. So that how this is going to go along is I would be most of the time I would be just acting like a moderator, and will be more of a group discussion kind of thing. So those who have gone through this case study, I hope it has been time enough now. So I hope everybody is ready to discuss and contribute this way or that, and everybody must be having a few questions. It has been already established that this was a real life case study which KPMG faced, and let's see what they have to say and let's see what your understanding about it. So maybe one of you can go through, can somebody, one of you discuss, just switch on your mic, not everybody. You will take turns to switch on your mic and say what you have to say, and then you turn the mic off again. So can somebody just go along? What do you understand by this credit card fraud? What is this fraud, and what is the landscape? Anybody? As they say, ladies first. So maybe we have Monica and Jyoti here. So maybe one of the ladies can go first. So basically, credit card fraud or fraud is something that a person do for the personal gain. और basically इसमें दो बता रखे, थर्ड पार्टी फ्रॉड एंड फर्स्ट पार्टी फ्रॉड. फर्स्ट पार्टी फ्रॉड इज समथिंग लाइक जो जिसका कार्ड होता है वो खुद ही करे, एंड थर्ड पार्टी फ्रॉड इज लाइक कोई थर्ड पर्सन उस चीज मतलब क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड करे. Mm-hmm. Fine enough. Anybody else wants to contribute? Sure, Shekhar, you can go ahead. Yes, sir. Sir, so in this case study, like Monica said, one more thing I would like to highlight about this project, because in this we have some 3 points. So one of the point in India, actually, we say that when a person is like swiping the credit card from the ATM multiple times within a particular time gap, so it is considered as a suspicious activity, because there is an overcharge being charged on that card, and nobody
any cardholder will not like to pay that much charges again and again. So third person might be the one who can actually swipe the card multiple times within a particular time frame and withdraw the money. So this is one of the main things that is being Okay. considered in India. Yes, sir. Okay. So that is the scenario of credit card fraud, that somebody has availed credit card, and then there can be two kinds of fraud. That one, the person who has availed the credit card, he or she himself or herself is uh, doing some unlawful activity. So that is first party fraud. There can be third party fraud when which is by far everybody uh, knows about it. किसी और ने credit card use कर लिया आपका, and that is causing a fraud. Surprisingly, it is given in this document, ऐसा लगता है कि शायद थर्ड पार्टी फ्रॉड ही ज्यादा होते होंगे. But surprisingly, the fact is, what the data says, that there are first party frauds in ample numbers. In fact, the ratio is nearly equal. Very well. Now, why did credit cards came into picture, and what is the environment of a credit card operation? What is this system? So you must have gone through it. Anybody wants to discuss it briefly? If I give my 2 cents, वो कल ही मैं बात कर चुका हूँ. Anybody? Sir, sir, Shekhar here. Yes, Shekhar, please. Yes. So, credit card itself, you can say it's a virtual money. You can't actually see it, and you don't have a particular bank account in that. So the credit card company actually have a tie-up with some banks, like American Express has an tie-up with United Bank. So it is being given on some lending basis because when you don't pay the amount on time, you don't refund it the amount on time, you are being charged. You are being charged a particular amount of money after that particular date. So it's a virtual money, and so the company itself is lending money to you in the form of a credit card, and there are certain benefits attached with it. But if you compare those benefits, if you convert those benefits into monetary value, they are less as compared to what you spend actually in reality. Uh-huh. So there are reward points, there are memberships. So memberships are not that much being used these days. Like these days is a bad time going on, and the conversion of the money is being less. So that is another thing in that. So you don't have a particular bank account in this. So this is the main drawback in credit card. This is it. Okay. So very fine, very fine, very much in place. So I hope everybody got this gist. In credit card, there are four parties after all. One is the issuing bank, जहाँ आपका account होता है. So they are the issuing party. Customers, then there is customer, who is the beneficiary, who has availed the credit card, the user. In between there comes the merchant bank. We are calling it merchant bank, and you can call it the service provider, or you may call it the third. It acts kind of an outsourcing of this management. Bank will not actually deal with your transactions and management of those things are kept with the merchant, like Visa, Amex, Mastercard. Fair? आप में से कितने लोगों के पास है क्रेडिट कार्ड? Anybody who has credit card? Okay, okay.
I have it, sir. So, okay, most of you have a credit card. Nagin, you don't have credit card. You don't use. As far as I know, you have enjoyed a long career. So, अच्छा. Okay. Okay, you have availed the credit card and then you have written it off. राइट ऑफ में चले गए थे. हाँ, फिर नहीं मिलेगा. ऑलरेडी रेड मार्क हो चुके हो. Then there is a brief of transaction cycle. How the cycle happens. How a credit card works. Can somebody explain the cycle? How the transaction actually occurs? What is the complete life of a transaction on a credit card? Those who have it, they must know it. Document तो पढ़ा ही होगा. You actually don't know it being a user, but now you have the case studies. So there it is explained what is the life cycle of a transaction by a credit card. Abhishek, have you gone through it? Can you explain it for everybody? हेलो सर. Hello. सर बेसिकली सर मतलब मेरा चार्जेस मतलब 25K का आपका क्रेडिट कार्ड है, तो आप पूरा उसको यूज कर लेते हैं तो सर 1 साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उसमें आप पे करते हैं, हर मंथली कटता है. Mm-hmm. तो अगर सेकेंड आपको साइकिल यूज करना है, उसका सेकेंड 25 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं. तो जब तक आप 25 पे नहीं कीजिएगा तब तक सेकेंड साइकिल स्टार्ट नहीं होगा सर. दैट्स इट. Mm-hmm. Okay. Maybe somebody else सर actually. This is not what actually means by the transaction cycle. Somebody else wants to go. Yes, Manish, please go ahead. Manish, you are not audible. Yes, can you hear Manish? I think he is not talking. Anybody can hear Manish? Oh, well, so Manish, you are not audible currently. Not yet, Manish. Others are also saying this. If it was only me, then it might be glitch at my end, but it seems like nobody else can hear you. Sure. Meanwhile, can anybody else go? Yeah, sure, Monica, please go ahead.
सर इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ऑथराइजेशन साइकिल, देन क्लियरिंग साइकिल एंड द सेटलमेंट साइकिल। ऑथराइजेशन साइकिल में क्या होता है, जब कोई भी कस्टमर किसी मर्चेंट के पास जाता है तो वो अपना क्रेडिट कार्ड मर्चेंट को देते हैं, लाइक शॉपिंग करने का क्रेडिट कार्ड उसे देते हैं। तो मर्चेंट के पास क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन होती है, एंड देन मर्चेंट अपने एक्वायरर बैंक को क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है उनको, साथ साथ जो कस्टमर है उनकी इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। एक्वायरर बैंक उसे वैलिडेट करता है और उसके बाद पेमेंट गेटवे को प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन। पेमेंट गेटवे क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करते हैं और उसके बाद इश्यूअर बैंक को वो वैलिडेट करने के लिए देते हैं। इश्यूअर बैंक के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आती है वो चेक करते हैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को अपने डेटाबेस में, चेक करने के बाद कोड प्रोवाइड करते हैं टू द पेमेंट स्कीम। तो जैसे पेमेंट नेटवर्क के पास इश्यूअर बैंक से रिक्वेस्ट आती है, वो एक्वायरर बैंक को प्रोवाइड कर देते हैं इस स्टेप में कि वो ट्रांजेक्शन एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। 3 स्टेप्स होंगे। लेकिन हमारी होती है क्लियरिंग साइकिल। क्लियरिंग साइकिल में हमारा एक्वायरर बैंक, पेमेंट स्कीम एंड इश्यूअर बैंक, इन तीनों के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती है, लाइक ट्रांजेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं। ये 3 टाइम्स अ डे होती है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन साइज। एंड देन सेटलमेंट साइकिल में हमारी एक्चुअल मनी की मूवमेंट होती है फ्रॉम इश्यूअर बैंक टू द एक्वायरर बैंक। Okay. So everybody got this idea. So there is a lot of work going on behind the screen. आप तो कार्ड पंच करके आ गए. After that, what happens is your data is matched with your issuing bank कि ये डेटा सही है, यही कस्टमर है, इसको ये क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है आप लोगों ने. मर्चेंट ने अपना भी डेटा भेजा हुआ है. दिस हैपन्स ऑटोमेटेड है ये प्रोसेस बाय द POS डिवाइस. तो ऐसा नहीं है कि जब आप बिल पे करेंगे तब वो मर्चेंट को पैसा मिलेगा. मर्चेंट को तो पैसा मिल गया, राइट? सेम डे मिल गया. नॉट सेम डे, इनफैक्ट मे बी विद इन, देखा ना अभी, that this cycle happens thrice a day, at least twice a day. तो मर्चेंट को तो सपोज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आफ्टरनून तक पैसा क्रेडिट हो जाएगा. इट्स ऑल अबाउट ऑथराइजेशन. So yeah, so far so good. How does this data will travel? कैसे गैदर होता होगा ये डेटा एंड कैसे ट्रेवल होता होगा ये डेटा? सो देयर कैन बी वेरियस सोर्सेज ऑफ दिस डेटा. क्रेडिट कार्ड जहां भी यूज कर रहे हो, मे बी यू कैन यूज इट एट ATMs, maybe you can use it at POS, maybe you can use it at CNP channels. Can somebody throw some light on CNP channels? Yes, sir, sure. May I? Yeah, please. Sure. Go ahead, Nagin. Uh, CNP, full form of it is called card not present. I mean, Mhm. whenever we make any transaction on just like our Flipkart, Amazon, where we don't need to swipe our card, we need to enter our card detail and validate Okay. it. This kind of data, known as CNP, goes to the CNP channel. Am I right? Very fine. Very fine. Exactly. Suppose you are purchasing something from e-commerce website, right? So then you don't actually, physically punch your credit card somewhere. You just enter the details on the website or the app and you are good to go. And exactly, very much thanks, Monica, to add this up. Suppose you are adding your phone pay balance or Paytm balance. Again, you don't actually punch your credit card somewhere. You have just entered the details and there will be balance on your e-wallet. Now, among all these sources,
there can be there are certain chances of fraud depending upon the security and the protection systems. तो इन फ्रॉड से सेफगार्ड करने के लिए कि ऐसा फ्रॉड नहीं हो, और व्हाट इज द फ्रॉड प्रोटेक्शन सिस्टम दे हैव डेवलप्ड? क्या तरीका सोचा है उन्होंने फ्रॉड से बचाए रखने के लिए? पहले तो ये सोचो फ्रॉड क्या क्या हो सकता है। कैन समबडी टेल मी क्या क्या फ्रॉड हो सकता है इसमें? Sir, There are three nowadays it channels. is too much easy. Just Nowadays, this is card. Our bank issues chip type card, where we don't need to. So we don't need to put my OTP or something PIN. They just without swapping, they just swap or uh, 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 they just put our card in front of the machine, and the amount is already deducted, right. automatically deducted. This kind of thing. Right. Earlier it used to be magnetic strip. Then came the microchip, like a SIM card, and recently they have come up with RFID. So now you don't even need to, swipe or push your card into the machine. You will just tap it on the machine, and RFID will do the job just like Bluetooth. But then there is, it is convenient, but it is risky. At the other hand, what could be the fraud here? आपका कार्ड किसी और को मिल गया तो उसे कुछ करना नहीं है। दे विल जस्ट टैप बिकॉज ओटीपी आता नहीं, पिन डालने की जरूरत नहीं है उसको, स्वाइप मार के आ जाएगा। सही बात है। So that is a third party fraud which can happen. Can you think of a first party fraud here? What can be the first party fraud which can go along? जैसे मैंने कुछ मार्केटिंग कुछ बाय कर लिया, बट मैंने डायरेक्ट बैंक को बोल दिया कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, लॉस हुआ है, मतलब मैं इसको नहीं करने वाला पे। अब ये फ्रॉड, जो दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इज नोन एज फर्स्ट पार्टी फ्रॉड। खुद से कार्ड होल्डर लिंक जितने भी फ्रॉड की हो। ओके, वेरी फाइन। देयर कम्स वन एग्जांपल। हाँ सही बात है, मैंने ट्रांजेक्शन मैंने ही किया था, लेकिन मैं बैंक को क्या बोल रहा हूँ कि मेरा तो कार्ड ड्रॉप हो गया था, गुम हो गया था, ये तो किसी और ने करा होगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं भरूंगा पैसे। So that is very fine. That can be one example. Anything else? First part, that is Sir, definition kind of what, sir? Yes, Madhu, please go ahead. sir, is it possible that people can do dual transactions or more than one transaction at the same place and claim that they haven't done more than one transaction? Mm-hmm. Okay. I believe dual transactions or multiple transactions at the same place can lead to cheating or fraud. Mm-hmm. Mm-hmm. ठीक है, not wrong, not wrong. एक practical example, चलो मैं बताता हूँ, maybe everybody will gel to it. Suppose I am ordering my food from Swiggy, and I ordered the same order, but I ordered it twice because I need that. लेकिन मैं अपने बैंक को क्या बता रहा हूँ कि गलती से पैसे काट लिए स्विगी ने, वापस नहीं दे रहे मेरे। Getting the idea? Well, so there can be a number of things which people can do. People are very creative when it comes to fraud. So they can really come up with very nice ideas how to find a loophole and
leverage it to unethical benefit. तो अच्छा, एक बात बताओ, फिर तो इन्होंने सोचा भी होगा, इन्होंने भी तो सोचा होगा यार। ये जितने फ्रॉड हम सोच रहे हैं, बैंक वालों ने भी तो दिमाग लगाया होगा थोड़ा बहुत। So what they have done to safeguard themselves from these possible frauds? Somebody? It's given the document in the document. What is the fraud protection system? Can somebody explain that? You don't have to type everything. Maybe somebody can go with switching on the mic. Sir, Shekhar this side. Yes, Shekhar. Yes, sir. Sir, so FPS for fraud protection system itself is a very good one. So you have a preventive layer over here, which makes sure that the fraud doesn't happen. So in the preventive layer, they have like firewalls, they have networks, they have mapping addresses, and device ID as well. In this case, when even the fraudster also crosses the limits, then you can say there is a alert happens in the system, which can actually alert the bank, and they can take a step. Okay. This is the system which is installed. Okay. Shekhar, your voice is very feeble and the background noise is more disturbing. So could you find a quiet corner? Or is it happening just with me? Can everybody feel that? Did everybody feel that? Okay, sir, now it's here. Your own voice is very dim and Let me change my earphone as well. and then there is a zooming sound in the background. Okay, anyway, anybody else? Yes, exactly. It feels like there is a airplane parking nearby. Okay. Okay. Anybody else wants to contribute something different than this to protect these frauds? कि hacking नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए. For those purposes, they have used firewall protection is there, and there are network detection that whether you are, many banks. In fact, even in mobile banking, you must have realized that. I don't know exactly now, but I think HDFC still does it. I have HDFC account. Suppose आप dual SIM फोन यूज कर रहे हैं और आपके बैंक में जो रजिस्टर्ड नंबर है, अगर उसी से डेटा चल रहा होगा फोन पे, तो आपकी बैंक की ऐप लॉगिन होगी, अदरवाइज वो लॉगिन ट्रांजेक्शन नहीं करने देता. So they are that paranoid. But I think it is good, at least for banking, phone banking. है ये किसी और को पता है? कोई और बैंक कर रहा है? Have you realized this? I know this because I use 2 SIM cards and I use HDFC. So I have experienced that firsthand. So first thing is, let's firewall. फ्रॉड होने ही क्यों दें? जितना उसको गार्ड कर सकते हैं उतना गार्ड करते हैं. बट देन देयर कम्स दैट इवन अगर कोई फ्रॉड कर ही रहा है,
एटलीस्ट क्या हमें पता चल सकता है? So that is the second layer. If prevention fails and actually fraud is happening, then at least detection हो जाए, पता तो चलना चाहिए. So that is the second layer. So there is entire ISO standards for that, and it is well documented. क्या क्या चीजें होनी चाहिए. So very fine. So prevention layer, well, that is much of a techy thing, but detection, that is the data thing. तो ये पता कैसे चलेगा कि फ्रॉड डिटेक्ट हो जाए? कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है तो शायद ये फ्रॉड है, और मे बी मिस यूज. लेट्स कॉल इट मिस यूज फॉर नाउ, बिकॉज फ्रॉड अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो पता चला है कि समथिंग इज रॉन्ग है. एक फ्रॉड के बारे में तो बताया ही नहीं, थर्ड पार्टी जो आजकल चल रहा है, जमतारा. जमतारा. सर बंदे को पता भी नहीं होता, बट उसके साथ फ्रॉड हो चुका होता है. Okay, maybe. Okay, maybe let's go through the case study first, and then we'll talk about that. फिलहाल उनको पीछे रखते हैं, because it is, it is actually not fault of bank, it is fault of the users, for any reason. They are not educated enough, or they are not careful enough. सर अमिताभ बच्चन के साथ हो रखा है, तो ही इज वेल एजुकेटेड. 5 लाख के ट्रांजेक्शन है उसके, जो अमिताभ बच्चन ने किया हुआ है. uh, let's again not go there. You never know. I have kind of stopped believing goes way beyond. I have even stopped watching news. We never know whether it was for just coming into the limelight, or whether it was to bring Jamtara into the limelight, whether it was for the movie promotion that Jamtara is releasing, and let's get it public, let's get it some fame. We don't know. Okay, for now, let's get ahead with this. So, what is the detection system? क्या डेवलप किया है उन्होंने डिटेक्शन सिस्टम में? Somebody, if you have gone through and you understood. क्या क्या चीजें हो सकती हैं? Anybody got this idea right? किसी को ये समझ आ गया था? Sir, but a bit. Pardon? Not exactly, but a bit of it. So, Sure. Go ahead. as it says in the case study, there is a mixture of if and else statements. So, for example, there is a code which says if transaction is greater than this, then maybe the alert systems get activated and it detects some misusing is going on. So there is some mixture of coding which has if and else statements which detects the fraud. Okay. So see, these are some, and they are calling it rule engines, that on what basis you can mark an activity that this seems suspicious, right?
So over the next few slides, there is explanation to that, and basically, they are. This is where machine learning and you people are coming in. Detection rule engine, the good old faithful. What is that? Like Madhur explained, detection rule engine. So that is, and I am saying it. It is good old and faithful because this has been in picture for ages. कैसा एक कस्टमर जिसके बैंक में पैसा नहीं रहता, जो यूटिलाइज भी आपको पता है कि वो 5,000 10,000 5,000 10,000 ऐसी ट्रांजेक्शन करता है मैक्सिमम, एंड सडनली वन डे यू सी दैट this customer is transacting for a transaction of 1 lakh altogether. What do you think? It should raise some eyebrows. Yes or no? So then there is sophistication of these weight configuration and velocity configuration. Weight configuration in the sense there can be certain weights to these transactions. Weights like suppose I'm not ठीक है मैंने कर रखे हैं कुछ transactions ऐसे भी which amount to 50,000 and 80,000 and 1 lakh, लेकिन कितने होंगे? बहुत कम होंगे. So then there are amount of transaction, and on basis of that, a weight is awarded. So that is again there comes machine learning tools, support vector machine, and deep learning kind of things come into picture. Velocity. What is velocity? Now velocity again, if I very crudely explain that, so I'm just giving you a basic notion of velocity. Otherwise, it is way too much sophisticated. What is your idea of velocity? Rule engine. क्या होता होगा इसमें? Here, yes. Time frame required to complete one transaction or one cycle. Here, yes. Here, the time is the measure. Time is the metric here. That in a certain time frame, how much amount transaction you are doing and how many number of transactions you are doing. So again, seems logical? Yes. Sir, may I add something to it? Yes, sure, Madhur. It is your forum actually. Sir, what I believe is what they can do to this particular detection system is they can also add a location factor, because transactions are also, when a person is holding a credit card, location also becomes specific because he or she might shop in a particular geographic area. So if they Right. can also add geographical location, they can, increase the efficiency of this particular system. बिल्कुल ठीक बात है. बिल्कुल ठीक बात है. मैं दिल्ली में रहता हूँ. दिल्ली ब्रांच में मेरा अकाउंट है और यहीं पे मेरे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं. ट्रांजैक्शन भी ऐसे हैं कि 10-20 हजार 25 हजार के करता हूँ. फिर एक दिन सडनली मैं 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ. कहाँ पे? इंदौर में. So these rule engines are not limited to these three. So as rightly said, so these are broadly the three rule engines, but then there are locations, layer of the locations, and what do I tell you? Currently, there is even behavioral patterns. You will, I don't know if you know that or not, but you will have to believe that Amazon will even do behavioral analysis. Amazon is doing at least. I don't know Walmart, but Amazon is doing this.
सर एक मतलब कंफ्यूजन है कि ये जो सारा जो सारी इंफॉर्मेशन है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग इंडियन बैंक की है कि यूएस बैंक के बिहाफ पे है, क्योंकि इंडियन बैंक के बिहाफ पे हमारा हमें काफी सिक्योरिटीज मिलती हैं, जैसे हमारे मोबाइल पे पासवर्ड आता है और आपको पिन दिया जाता है, बट यूएस के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मतलब आपके मोबाइल पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं आएगा, यू जस्ट स्वैप योर कार्ड तो वही पे वही खत्म हो जाएगा। You don't need to enter any kind of PIN or OTP. Very well, but I didn't get the confusion here. What is the confusion exactly? मतलब ये यहाँ का जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हमारे इंडियन बैंक के भी आप पे कि वहाँ यूएस के उस पे है? You tell me, what is the case study about? KPMG US. Well, I think that settles. So next, they have given some explanation about how this transaction anomaly will be detected and how somebody will be notified, how there will be a red flag when such kind of suspicious transaction happens. Let's come to the case. So far, it was pretty much straightforward. Okay, some background you got. What is the industry? How does it operate? And what exactly has to be done? What could be the trouble and what you can do to safeguard? So what do you see? What is the case? What is the use case here? What exactly is KPMG faced with? Sir, Shekhar this side. Yes, Shekhar. So, sir, KPMG in India, they have to design an anomaly detection system in which they have to make a system in which you can actually see more than 100 transactions per second. And there is a limit assigned to it, which is like 300 milliseconds for a particular transaction. Mm-hmm. So this was the main challenge for the KPMG in India. Okay. Okay. So the actual problem, the bigger challenge with KPMG was that data is coming at a ferocious speed. Yes, the input data is huge and it is, it is just like it is coming in at exploding rate. At the same time, you have to manage those transactions, and at the same time, there should be a checks for fraud detection. If there are suspicious transactions, then somebody should be notified. तो ये सिस्टम ऐसा भी होना चाहिए. Right? How did they go ahead with this project? How did they design and develop? Maybe somebody other than Shekhar. Shekhar has contributed enough. Vatsal, what's up today? Not very enthusiastic? Are you well? Then what? Don't want to contribute?
Vatsal is like, you are doing enough damage. Keep damaging. I won't contribute. Okay, okay. So down below there is a uh, typically how a product is delivered of this kind. We create a prototype with our best available knowledge to our best available skills and people. We run it for a pilot for some time, and usually it is not on actual data. Sometimes it is on actual data also, and we see how it is performing. And if the performance is satisfactory, we put this into production, and then we keep on, polishing it out. If pilot is not satisfactorily performing, pilot shows that performance is not satisfactory, then we go back and tweak the product itself. And then there are the people involved, the people whom KPMG actually involved. Do you get the job descriptions right? ये कौन आदमी चाहिए था और क्यों चाहिए था और क्या कर रहे थे? So could we briefly talk about them? Who is the technical manager? What does he or she exactly does? And this is a pretty senior role, by the way. Maybe a one-liner from anybody. Okay, okay. You don't have to type in everything. Just you can switch on your mic and uh, yes, sir. It is discussion. So you got the idea. So technical manager is the captain of the ship. He or she is the owner of the this project ultimately. So the delivery is his or her responsibility. When there is responsibility, there comes certain powers. So they will decide the flow of work, the book of work. They will decide what is the team required, who should be there in the team, and who will accommodate what responsibilities. This person is usually very handy with machine learning and data science concepts. This person is usually enough experienced into the business domain so that they know the industry inside out. Yes or no? Think about it. Machine learning तो तुम्हें भी आने लगा है. But did you know that how does credit card works behind the scene? अभी तक नहीं पता था. How are you supposed to deliver a product? So that is somebody technical manager. So he or she, this is the role where which stands at the intersection of business knowledge and data science knowledge, and it should be deep. It should be thorough. Next in line comes is the task manager, or we are calling project lead, or we are calling scrum master. Who is this person?
Mm-hmm. If he is the project manager, तो technical manager कौन था फिर? See, technical manager cannot be bothered for day-to-day operations. वो शायद उनमें involve करना नहीं हो सकता है. So that's where the role of Scrum Master or project lead comes in. So more like a team manager who Yes, basically has more interaction with the team, yes, kind of. The and technical man. sorry. हाँ, it's okay, very fine. Maybe, please go ahead. नो सर, यही था मेरा मतलब कि बेसिकली जैसे जो टेक्निकल मैनेजर होता है ऑब्वियसली उसके पास अब जैसे हर रोज डेली इंटरेक्शन का टीम के साथ टाइम नहीं होता, तो टू Right, अपडेट देम विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड टू अपडेट देम विद द टास्क. सो फॉर दैट देयर exactly. इज अ टीम मैनेजर हु इज बेसिकली हैंडलिंग द टीम and telling them and delegating about the task, what they have to do, how to achieve those objectives and what they have to do every day. So that is more of a project lead who has more interaction with his team who is working on that particular project. Very fine, very fine. So everybody got the gist. See, technical manager is a quite senior person. This person may be involved in senior management and stakeholders meetings. He or she may be in client-facing roles. They have to deal with the clients also. One technical manager may be dealing more than one project at a time. So this person cannot, okay, broadly, उसको पता है क्या करना है, कैसे ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, एंड उसने डिसीजन बना भी लिया है. बट डे टू डे एक्टिविटीज कौन हैंडल करेगा? सो देयर कम्स द रोल ऑफ प्रोजेक्ट लीड और स्क्रम मास्टर. Then there are then there are developers, copy pasters. No, actually, these are the people who are actually doing the work. They are the people who are actually getting their hands dirty and PC. They are the workhorses. Okay, day in day out, they are coding and refining the product and getting feedbacks from the bosses. Feedback तो क्या जूते चप्पल ही मिलते हैं बेचारों को. But anyway, on a sincere note, they are the people who actually build this project, who actually do the hard work. There is something highlighted here. Do you agree? They have left a note and it is highlighted. Yes, it is. It is imperative that you have a backup team. You have a backup resource. When it comes to development, when it comes to the developers or the people who are workhorses, after all, who are actually doing the job. So it should not be that somebody is loaded with the entire thing. So you should not rely on one, and for that matter, should not rely on two or three persons also. Okay, very fine. They came up with a project plan
and what was their plan? Can somebody throw some light here? Hanji, anybody? Maybe right now you people have this document. You can go ahead and see what they are mentioning, that this was our plan. Plan is necessary, isn't it? At least that much you know. They have to come up with a plan before actually jump into the water. So what did they come up with? You people got this? So I जो think उन्होंने प्लान एक्सप्लेनेशन दिया है, बता सकते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने बात की हुई है? अगर समझ आ गया तो बोलो, समझ नहीं आता है तो मैं बात करूंगा। किसी को समझ आया तो बात करते हैं। Somebody was speaking. I missed. yes, sir. Sir, Shekhar, sir. हाँ शेखर, प्लीज। Yes, sir. Sir, project plan में basically जो focus किया गया है वो actually they are focusing on the data collection, the structure of data and data sources. इसमें focus किया गया है, and the other things that they're focusing on is project motivation and defining a problem basically they're focusing upon. And the other thing is that sometimes data is not available. So the validation of the data, that is, they can actually define that it's the right data or not. This is also visible in that. ओके, वन इज डेटा। ठीक है, डेटा तो डेटा सोर्स से मिलेगा, जो क्लाइंट है वो प्रोवाइड करेगा। उस डेटा में ठीक है, दे हैव टू हैव सम चेक्स ऑन डेटा आल्सो, बट व्हाट इज देयर ओन, so what they have done is I would like to add. yes Nagan, please. I would like to add something. I mean, in plan, they need to. What is their basic requirement for it? I mean, they just document it, and after documenting it, they send their client, and after approval or after they getting the required project, they implement as according to their plan. For example, requirement of the project, which kind of tools they required. There might be their Yes, process on R or Python. exactly. See, these are kind of things which जो सोचने में ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है, ये किसे नहीं पता होते। पता तो है, बट अगर ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे, then you may be lost every now and then. Yes or no? You will lose track of your progress every now and then, and पता ही नहीं चलेगा कि क्या करते हुए आ रहे थे, अगला काम क्या करना है। गलती से बीच में किसी ने जॉब छोड़ दी,
कोई बीमार पड़ गया तुम्हारा टीम मेंबर तो नहीं आ सके, तो देयर हैज टू बी अ क्रंच रॉक सॉलिड गाइडलाइन which has to be followed so that you know that in this much time where you have reached. Among all of these, what do you think is of paramount importance? Importance तो सभी का है, तभी तो डॉक्यूमेंट में है. ऐसी क्या क्या बातें हैं जो तुम्हें लगता है which are very too important, ये तो मिस होनी ही नहीं चाहिए? Please switch on your mic, guys. Mic on कर लो, बोलो. Unless and until you are disturbing others, I'm good. So गोल क्या है सर? सबसे इम्पोर्टेंट तो गोल ही है. okay. गोल. फिर सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज डेटा. Okay. और फिर थर्ड क्लाइंट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे, गोल में ही आ जाएगा वो तो. वी विल कवर इट इन गोल. क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि कितने दिनों में करना है टैट, आई मीन कि महीने भर में लगाना है, 1 वीक में क्लाइंट रिक्वायरमेंट 1 वीक में है. Okay. देखो एक चीज तो आया कि प्रोजेक्ट का प्लान होना चाहिए कि ये हमारी प्लानिंग है, हम इस तरह से काम करना शुरू करेंगे, ये चीजें होंगी एंड इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड सो एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज, एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल. Then what are the elements to this plan? We are discussing that and among them some are of paramount importance. तो पहला क्वेश्चन जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि ऐसे प्लान की जरूरत क्या है. ठीक है नागेंद्र, गोल ठीक है डॉक्यूमेंट किया है बिकॉज इट शुड बी वेल एस्टेब्लिश्ड, लेकिन डे टू डे में what are the things I should keep an eye on? I have to start working tomorrow henceforth. So important तो सभी हैं. Why we are doing this project? It should be well established and it should be well documented so that we have our eyes every now and then on it. What is the strategic goal? Then we come to problem definition. What is the output expected? Very fine. One important thing to get the expectation right. जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी एग्जाम्पल से अपनी लाइफ से. Kind of similar thing I did. I started devising this list, this kind of a plan, and my focus was on okay, what is the expectation. So that's one. Another thing which is of paramount importance. Yes or no? So when I was introduced that this is the job, my first two questions went like this. मार्केट शेयर लाना है, हाँ ठीक है लाना है, कितना सोच रहे हो, कितना आ जाएगा और कितना टाइम दे रहे हो मुझे उसका, कितना बजट दे रहे हो मुझे उसका. यही 3 क्वेश्चन करे थे मैंने. Okay. Anything? Any questions about this project plan thing? यहाँ ये पॉइंट क्यों है या इस पॉइंट का मतलब क्या है, कुछ ऐसा? When broad guidelines are decided, then it came who is responsible for what, who to contact for what problem. Very fine. So again,
resource allocation. So I think that is pretty straightforward. यहाँ तक अब किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कुछ anybody wants to contribute something? Sir, Shekhar this side. Yes, Shekhar. Sir, I think it's more of a project management thing, right? Management values. Correct. Because you have a certain timeline and you have certain goals that should be defined and you should work upon that. Okay. Okay. So once they have sorted things at their end, the KPMG guys, now comes the question of data. How will data be available or unavailable? कैसे collect होगा? Anybody wants to go through this? डेटा को लेकर के क्या सोचा उन्होंने, कैसे अवेलेबल होगा डेटा, क्या मिला उनको, आराम से मिल गया या प्रॉब्लम आया? हैव यू गॉन थ्रू दिस? Yes, Monica, please go ahead. सर एक्चुअली जो ये डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो रियल डेटा सेट बहुत मुश्किल होता है फाइंड आउट करना। तो इन्होंने कुछ डोमेन एक्सपर्ट को देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा कुछ प्रोवाइड हो जाए, ताकि वो मतलब जो भी उन्हें डेटा प्रोवाइड होगा उसके ऊपर अपना मॉडल क्रिएट करे एंड देन कुछ मतलब डेटा लाइक ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा के तरीके से हमने काम किया था आर्ट पे। ओके ओके, so it is that's the challenge they faced when it came to data collection. तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो डेटा अवेलेबल है इट इज नॉट रेडिली अवेलेबल, और अवेलेबल है भी तो एक्चुअल फ्रॉड केसेस वाला डेटा मिलना मुश्किल है। प्रॉब्लम है। So they must have hired somebody from this credit industry and they tried to figure out कि ये डेटा कहाँ से मिल सकता है and how it can be what are the alarms which you should look into. So there are some alarms which you have already seen rule engines में जो देख रहे थे हम लोग, कुछ कुछ ऐसे ही हैं these examples. What do you say? जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, रूटीन में स्मॉल ट्रांजेक्शन होते थे, सडनली समडे इट इज अ वेरी ह्यूज ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बड़े ऑड टाइम्स में हो रहे हैं, या ट्रांजेक्शन इन अ हाई रिस्क कंट्री, and for that matter it cannot be country, it cannot be geography also.
Very fine. So again, so when they could gather some use cases, and after some research, they used, well, ये तो तुम्हें भी आता है. They use two samples of that data set, one to develop the model and another is to test the model. What about data understanding and preparation? What did they actually do? Any problem, any challenge they faced here? Somebody? Can somebody explain? Yes, Shekhar, please go ahead. If nobody is, sure, you can go ahead. Yes, sir. So, sir, as we know that the credit card data is highly imbalanced and it's difficult to find out. So, if you get a complete data set, it's difficult to find out the fraud in the transaction. So, they were finding more of the legitimate as compared to illegitimate transaction. It was difficult to find out in that. So it was more of the normal transaction and less of the illegitimate transaction. So it's so difficult to find for them. And accuracy was also not the mark. So this was the data understanding of the KPMG team. Okay. Yes, sir. हाँ जी, problem समझा सबको? Now this is something interesting coming up, because this is your job when you will be in the job role. समझ रहे हो? स्टेशन से निकल गए, होटल में चेक इन कर चुके, तुम्हें करना है अपने हाथ से काम. ठीक है? हाँ जी, बाकी सब बड़ी बड़ी बातें करके चले जाएंगे, डेटा साइंस कॉन्सेप्ट एंड दिस जार्गन एंड दैट जार्गन. काम तुम्हें करना है, करो क्या? प्रॉब्लम समझा क्या है? आपको प्रॉब्लम समझा यहाँ पे क्या है जो बताया अभी शेखर ने? एवरीबॉडी, डॉक्यूमेंट में भी लिखा है, शेखर हैज एक्सप्लेन्ड दैट इन वेरी ल्यूसिड एंड शॉर्ट एंड स्वीट टर्म्स. क्योंकि थोड़ी देर पहले ही देख चुके हो, दिया हुआ है इसमें डेटा में दैट फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स आर, अगर रेशो देखें तो 3:100 का रेशो है, मोर और लेस. उन्होंने कहीं से डेटा ढूंढ भी लिया, मिल भी गया है, डेटा अवेलेबल कर लिया. पहले तो अवेलेबल ही नहीं हो रहा था, बट विद हेल्प ऑफ सम डोमेन एक्सपर्ट they have availed the data and now they have samples. But within that data, अभी क्या प्रॉब्लम है? अगर गुड ट्रांजेक्शन्स 100 हैं तो फ्रॉड ट्रांजेक्शन्स का डेटा बहुत कम है आपके पास. ये प्रॉब्लम क्यों है, बता सकते हो? डू यू हैव एन आइडिया ये प्रॉब्लम क्यों है? बायस, हाँ ठीक बात है, एक तरह से बायस है, चलो बायस है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है? बायस है वो तो दिख रहा है, Sir, maybe the होगा क्या बायस का?
Yes, Shekhar, please. Sir, maybe the detection system is not able to like find out more of the fraud problems, fraud transactions. So there can be more of them, like not exactly three, but there could be more of them. Okay. And yeah, you can say the firewalls and all that. It's not up to the mark. Maybe I don't know I'm wrong or right, but this is my reading about this. Yes, exactly. Suppose you have a huge data set, लेकिन उसमें fraud transactions बहुत कम हैं. So you have very little information, very less data for your model to learn that ये fraud होते कब. So simply put, it is that. Well, मैं पूछ रहा था कि इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इस बायस से प्रॉब्लम क्या होगा जो हमने अभी देखा कि फ्रॉड के केसेस तो बहुत कम हैं, वेरी लेस कंपेयर टू गुड ट्रांजैक्शंस. जैसा इनके डेटा में I mean they have given a global figure not of their particular data set, but हाँ अपना प्रॉब्लम तो उन्होंने बताया ही है कि इस तरह का सिनेरियो देखने के लिए मिला है. What can go wrong? मैं पूछ रहा था आपसे. There is very insufficient, the data is insufficient for your model to train upon. In the sense, suppose if I show you this data, say there are several, these are your predictor variables x1, x2, x3, and then finally there is target variable y. Right? तो इनमें तो कुछ डेटा चल रहा होगा, sometimes numeric, sometimes categorical. Okay? आपके टारगेट वेरिएबल कैसा चल रहा होगा? कैसा चल रहा होगा? Good transaction, good transaction, good transaction, good transaction, good transaction, and all are good transactions except for a very few which are fraud transactions. Very few, rarely. So just imagine millions of good transactions and among them very few fraud transactions. हाँ जी, मॉडल कैसे बनाते हो आप? मॉडल कैसे बनाते हो आप? Your target variable tilde your predictor variables. Yes or no? x1 plus x2 plus and as many as the case may be. ऐसा ही तो करते हो. What this will glitch is जब मैं कह रहा हूँ there is very insufficient data for model to learn कि ये fraud transaction कब होगा. एल्गोरिदम कैसा ग्लिच करेगा आप लोगों का? आपके एल्गोरिदम को क्या दिखेगा कि ये सारे गुड ट्रांजैक्शन ही होते हैं, ये जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो रहे हैं शायद बाय द वे हो रहे हैं. आपका प्रेडिक्टर वेरिएबल में कुछ भी चल रहा हो, ट्रांजैक्शन हमेशा गुड ही होता है. हाँ कभी कभी फ्रॉड हो जाता है, पर इट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट वो कब हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेडिक्टर. तो कितने भी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर क्यों ना हो, दे आर बाउंड टू ग्लिच. सही बात है. ये प्रॉब्लम तो हमने पहले भी देखा था. Perhaps I discussed कि डिफॉल्ट के केसेस में प्रैक्टिकल सिनेरियोज में ऐसी प्रॉब्लम कई बार होती है. दैट टारगेट क्लास इज इम्बैलेंस्ड. इम्बैलेंस है तो मॉडल खराब होने का चांस होता है.
उसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो भी, यही प्रॉब्लम हुआ है उनके साथ भी। ये डेटा ही ऐसा है। फ्रॉड हमेशा फ्रॉड नहीं होते रहते हैं ना, कभी कभार विरले कुछ लोग कर देते हैं। तो उसका तरीका क्या सोचा उन्होंने? इट इज कॉल्ड ओवर सैम्पलिंग। तो परहैप्स ये आप लोगों को समझ आ गया या क्वेश्चन है इस पर? आई एम आस्किंग टाइम एंड अगेन गर्ल्स, अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करो, अगर पता है तो कंट्रीब्यूट, एनलाइटन अदर्स। ओके ओके, सी पहले तो इससे ऊपर वाले प्रॉब्लम पे आते हैं। चलो जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। प्रॉब्लम तो समझ गया। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो टेक्निक्स होते हैं जो उन्होंने दिए हुए हैं। दे आर कॉलिंग इट ओवर सैम्पलिंग एंड अंडर सैम्पलिंग। अब दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं। होते क्या है, अगर मैं अंडर सैंपल करूं, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो गुड डेटा है, ये जो गुड डेटा है, इसमें से एक सैंपल निकाल दूं और सबसेट, बाकी डेटा छोड़ दूं। तो कितना डेटा बचा मेरे पास? कितना डेटा बचा? अब थोड़े से उसमें फ्रॉड हैं, थोड़े उसमें गुड ट्रांजेक्शन हैं, डेटा बैलेंस हो गया, क्लास बैलेंस हो गई। अब मेरे मॉडल को ऐसा नहीं दिख रहा कि ये तो हजारों तो गुड ट्रांजेक्शन है, एक दो फ्रॉड होते हैं। अब उसे ऐसा नहीं दिख रहा है, अब उसे कैसा दिख रहा है, अच्छा थोड़े से ये तो गुड ट्रांजेक्शन हैं, थोड़े से ये फ्रॉड ट्रांजेक्शन हैं, इनमें कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रिडिक्टर। देख लेंगे, सिंपल। नुकसान क्या है इसका? दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, वैसे समझ आ रहा होना चाहिए अब तक आप लोगों को। क्या नुकसान है इसका? व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ दिस? डेटा तो बैलेंस हो गया। somebody क्विकली बताते रहो। टेक्निक है, अवेलेबल है, यूज कम करते हैं। रीजन बीइंग, अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिखाई दे रहा है ना यहीं पे, इट इज रिजल्टिंग इन डेटा लॉस। मेरे पास जो डेटा अवेलेबल था, आई हैव लॉस्ट दैट। तो मेरे मॉडल को जितना इन्फॉर्मेशन दे सकते थे वो नहीं दिया हमने। स्ट्रेट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ओवर सैम्पलिंग। ओवर सैम्पलिंग में हम क्या कह रहे हैं कि हम डेटा लॉस तो नहीं करा रहे। तो जो गुड ट्रांजेक्शन का डेटा था वो एज इट इज है, ये जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन का डेटा था, इन्हीं रोज को एज इट इज क्या कर लें, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लो, और कॉपी कर लो, और कॉपी कर लो, एंड वंस यू हैव डन, यू नो, ओवर सैम्पल्ड इट मेनी अ टाइम्स, तो अब क्या हो जाएगा, फाइनली दिस डेटा विल हैव, इनका रेशो बढ़ जाएगा गुड और फ्रॉड का। यस और नो? यस और नो? जितने फ्रॉड ट्रांजेक्शन थे उनके डुप्लीकेट वैल्यूज बना दिए, तो ये ओवर सैंपल हो गया। सो दिस इज ओवर सैम्पलिंग ऑफ माइनॉरिटी क्लास। अंडर सैम्पलिंग में क्या कर रहे थे? अंडर सैम्पलिंग ऑफ मेजॉरिटी क्लास। इसका भी कुछ डाउन साइड है। कुछ डाउन साइड है। हाँ, आगे वो वही डिस्कस कर रहे हैं।
तो पहले उन्होंने बोला हमने अंडर सैम्पलिंग नहीं की, क्यों नहीं की? डेटा लॉस हो रहा था। सेकेंड उन्होंने पूछा अब क्या क्या कर सकते हैं, ओवर सैम्पलिंग कर सकते हैं। ओवर सैम्पलिंग कैसे कैसी हो सकती है? एक तो रैंडम हो सकती है। रैंडम मीन्स रैंडमली मेजॉरिटी क्लास की रोज कुछ उठाई और कॉपी कर दी मल्टीपल टाइम्स। आई थिंक मनीष इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे ख्याल से यार। जैसे डुप्लीकेट रोज आ जाती थी वही तो करने हैं, मैंने डुप्लीकेट बना दी है रोज। यहाँ पे इफ यू जस्ट इमेजिन दैट देयर इज डेटा, यहाँ पर सपोज ये डेटा था, एंड दिस वाज अ फ्रॉड ट्रांजेक्शन। मैंने कहा इसको मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर दो, तो अब मेरी ये रोज बढ़ गई फ्रॉड ट्रांजेक्शन वाली, एंड टारगेट क्लास में बैलेंस आ गया। अब इसमें बहुत सारे गुड ट्रांजेक्शन हैं तो बहुत सारे फ्रॉड ट्रांजेक्शन हैं। अच्छी बात है, यही प्रॉब्लम थी ना, मेरे मॉडल को दिखा नहीं था। एग्जैक्टली शेखर, यस वही किया है। सो दिस इज ओवर सैम्पलिंग। हाँ जी, इसका कुछ डाउन साइड समझ आया हो आप लोगों को पढ़ के? लिखा हुआ है सर। रैंडम सैम्पलिंग में क्या किया? द इंस्टांसेस मीन्स द रोज, द ऑब्जर्वेशन, माइनॉरिटी क्लास की उठा करके रैंडमली कुछ उठाई और रेप्लिकेट कर दिया। डाउन साइड क्या है इसका, वो पूछ रहा हूँ जल्दी। हाँ, जी मीन्स गुड ट्रांजेक्शन या सेफ ट्रांजेक्शन। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड। एसेंशियली क्या किया है मैंने? आई हैव करप्टेड माई डेटा। ओरिजिनली डेटा में बस ये 2 रोज थी, बाकी सब मैंने डुप्लीकेट बनाई हैं। तो आई हैव एसेंशियली नॉट प्रोवाइडेड न्यू इन्फॉर्मेशन टू मॉडल। ये उसी इंफॉर्मेशन के डुप्लीकेट्स हैं, एंड विच विल टेंड टू व्हाट, विच विल टेंड टू व्हाट, मेरे मॉडल को लगेगा ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन्हीं से तो फ्रॉड पता चल रहा। एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई हैव जस्ट रेप्लिकेटेड दीज रीडिंग्स, इस वजह से इंपॉर्टेंट दिख रही। So in a way, I am pushing my model to overfit towards these values, specifically these readings, which is not good. ठीक है? I hope you got the idea. समझ आया है क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम था टारगेट क्लास में इम्बैलेंस था। There are 2 classes, but one class is very very small than other class. मेरा मॉडल खराब हो जाएगा उससे। तो हमने उसका तरीका क्या सोचा? अंडर सैंपल कर सकते थे, उसका कुछ डाउन साइड था, डेटा लॉस, तो उन्होंने वो नहीं किया। ओवर सैंपल कर सकते थे, ओवर सैम्पलिंग में क्या कर सकते थे? एक तो रैंडम सैंपल, उसका भी कुछ नुकसान है, ओवर फिट हो सकता है मॉडल। और क्या कर सकते थे? क्लस्टर बेस्ड दिया है उन्होंने, क्या होता है? अभी आपने के मीन्स एल्गोरिथम पढ़ा नहीं है, तो अभी ये समझोगे नहीं। जब आएगा के मीन्स पाइथन में तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये काम कैसा करता है। बट ये भी नहीं किया है। दे हैव डन इन्फॉर्म्ड ओवर सैम्पलिंग विच इज नॉट एग्जैक्टली रेप्लिकेटिंग। अगेन इट इन्वॉल्व्स KNN मेथड, तो वो भी आपका पाइथन में ही आएगा। बट यू गॉट द आइडिया, प्रॉब्लम समझ आया और काम क्या करना है वो समझ आया। अंडर सैंपल नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजिंग सम टेक्निक टू ओवर सैंपल द माइनॉरिटी। हाँ, डेटा लॉस से तो अच्छा है। वॉइस, कैन somebody confirm? Is my voice?
Guys, is it okay now?